Okay, audible and visible. क्रिस, तू स्टार्ट से लेक्चर ज्वाइन करेगा क्या? आयनिक आयनिक स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आज। हाँ सर, मेरा आयोनिक मैं तो बीच में से ज्वाइन किया था ना। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। नो, तो मैं अभी आयोनिक पूरा आपका ये ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, फिर मैं बंद कर दूंगा ऑनलाइन वाला। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके, सो बेसिकली what is happening? So basically, we are going to start the new chapter ionic equilibrium. हाँ हर्ष बोलो। सर हम लास्ट टाइम का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं क्या? मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। Okay, छूट गया था क्या? Okay, let me see. आपने होमवर्क दिया था वो। Okay, let me see. अच्छा, लास्ट में देयर वाज अ पैराग्राफ आई थिंक, है ना? दैट वाज द केस क्या? यस सर। Okay, let me see. हाँ सर, मैंने भी ट्राई किया था, मुझसे नहीं हुआ। Okay, let's see. Why it is not? Okay, this one now. This paragraph now. यस सर। Okay, let's see. Okay, basically, if you see, we have been given two reactions. What is common? If you see what is common, NO2। NO2 is common. Na? So I told you there is just one line trick that, in fact, there are two line cut trick. Hai. One trick is that don't start working in the common reagent itself. Always start working in that substance which is not common. That's first part. Second part is whatever common substance is there, uska net jo active mass will be coming, na, that will be used in the uh, expression of reaction quotient of each reaction. Is it okay? These are the two lines we need to take care. So now if you see this reaction, the first reaction is 2NO2 gas, that is giving you N2O4 gas, and its Kp is given, that is 6.8. I'm not writing the unit. Then the second reaction is NO gas plus NO2 gas, and that is giving you N2O3 gas, but we don't know the Kp of this reaction. But it says we have added NO and NO2 in 1:2 ratio. The final total pressure was 5.05 atm, and the partial pressure of N2O4 was 1.7 atm. When they say final pressure, that means they are talking about pressure at equilibrium. Okay? Is it okay? Now, what other data are given? Volume is constant and nothing else. Okay. So now what we are saying that initially and at equilibrium we'll have two rows in each reaction. Initial and at equilibrium. Now, if I start working like this was P naught and this was 2P naught, that was the initial pressure. That means NO was P naught and NO2 initially was 2P naught. That we are writing here. Now it says the final total pressure was this much. तो अभी क्या करने का है, जैसे मैंने बताया कि we'll start working with those components which are not common. तो not common वाले तीन substance मिल रहे हैं, N2O4, N2O3 and NO, है ना? So let's assume that NO का जो consumption है that is X. Okay, so we are writing P naught minus X is NO. If this is the fixed thing that NO is P naught minus X, definitely this will be X. Hai na? N2O3 will be X. Now, what about N2O4? So we don't know that. So if you assume that it is Y, now we'll not initially, it was 0. So at equilibrium, if you are assuming that to be Y, it means what is the consumption of NO2 in first reaction? What is the consumption of NO2 in 2y। first reaction?
2i. And what is its consumption in the second reaction? X. X only, क्योंकि coefficient are equal है ना. So what we are writing, P of NO2, if you want to know at equilibrium, so what I'll write, initially it was 2p naught. In each reaction it is getting consumed. So in first reaction the consumption is 2i. In the second reaction the consumption is X. So that's why we'll be writing this net in each reaction, and that's why it will become 2p naught minus 2i minus X here, and we'll write 2p naught minus 2y minus X here also. Is it okay? After that, what information it has given to you? This is saying that the total pressure was 5.05. P total at equilibrium, if you want to know, na, this is nothing but the P of the substances, which is NO2 plus PN2O3 and PN2O4. Now, if you see, if I start writing it, P naught minus X is partial pressure of NO plus NO2 is having 2 P naught minus 2I minus X plus now they have already given you N2O4 कितना. In fact, तुमने अगर Y assume नहीं भी किया होता ना तो you know that value है ना. तो Y is given as 1.7, तो एक unknown तो ऐसे ही eliminate हो गया ना. So we'll just write it 1.7 now. And sorry, N2O4 not N2O4, N2O3. This is X and this is 1.7. So we can replace later this one as 1.7 है ना. But this whole thing is 5.05. देखो ना ये कितना आसान हो जाता है. X will get cancelled है ना. Now we can say this whole thing is giving you that P naught and plus 2P naught. So 3P naught minus 2I की जगह now we can write 1.7 है ना. 2 into 1.7 minus X is 5.05. So we get the value of X in terms of 3, or otherwise we can write this one is 3P naught minus X is equal to, this is 5.05 minus 3.4 है ना. We have got one equation. Is it okay? सर -1.7 ना, क्योंकि वो ऐड भी हो रहा है. कहाँ ऐड हो रहा है? अच्छा हाँ, this one is also there, so -1.7. yes. So this becomes -1.7. So if you solve it, this is 0.35 and then 3.35 है ना. Is it okay? Now the second equation will Sorry, be coming plus from here. 1.7 no? What? Like it's plus 1.7 no? This is net minus 2i. So yes, sorry. So this is 6.75. Okay. So this is 6.75. Now, if you see, another equation will be coming from here. Kp is given. So we'll write 1.7, which is partial pressure of N2O4 divided by this partial pressure of NO2 का square. In fact, ये पूरा bracket वाली चीज एक बार में मिल जाती है. And that is this much square is 6.8, and that's why we can say P partial pressure of NO2 will become 1 by 2, that is 0.5. 1 by 4 का square root will become 1 by 2, that is 0.5. So P of NO2 we have got, and that is 2P naught minus 3.4 minus X, that is 0.5. So we have got two equations and two unknowns. So that will become 3.9. Plus we have got this equation and this equation. And now we can solve all things. Is it okay? So that's the way all these questions can be solved. If you take care of that two things, always start working on those things which are not common. And second thing is, when you write the common substance ka common reagent ka net pressure or concentration, that concentration or pressure will be used in the expression of Q of each reaction. Is it okay? So this was the case. Now you can solve it. मतलब start से पहले वाले से ही, if you just multiply second one by 3 by 2, तो देखो ना कितना हो जाएगा 3 by 2, so 7.8. सॉल्व कर लो इसको है ना. डायरेक्टली माइनस भी कर दोगे तो पी नॉट मिल जाएगा. पी नॉट विल बिकम 1.8 2.85. पी नॉट विल बिकम 2.85 है ना. और उसके बाद यहाँ सॉल्व कर दो तो 2.85 का डबल विल बी 5.7.
2.85 double, yeah, 5.7 minus 3.9, तो x becomes 1.8. x को 1.8 लेगा तो क्या पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO was P naught minus x, so P naught minus x will become, से सी P naught कितना 2.85 बोला ना, तो 2.85 माइनस कर दो 1.05 आ जाएगा ना, so that will be the answer. And then second Kp dash, तो वो तो निकाल दोगे यहाँ से, x upon this into this, है ना, that will give you this, है ना. Just check कर जाओगे, I don't remember the answer, I think मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, सो जस्ट चेक दैट, है ना. एनी डाउट, क्लियर ना, कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही थी. हर्ष, किधर गड़बड़ हो रहा था. सर आई थिंक मेरे को वो जस्ट लाइक आपने बोला ना 2p0 - 2y - x, मैंने हाँ, उसका भी x ही ले लिया था, तो मेरे को ओके, -3x आ रहा वी था. नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि वट एवर सब्सटेंस इज देयर ना, उसका नेट चेक करना है. सो नेट चेक करने के लिए व्हाट वाज इनिशियल, what is the consumption in any reaction, and what is the production in any reaction. In this case, in each reaction it was getting consumed only, and that's why we have calculated that -2y minus x, है ना. ठीक है, मान लो कई बार एक जगह प्रोडक्ट होता है, एक जगह रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन एंड देन रिएक्टेंट में वी नीड टू कंसीडर द कंजम्पशन. ओके, चलो, डन ना. Okay, so let's come to ionic equilibrium. Yeah, so chapter के बारे में first I'll give you the introduction that what we are going to deal with. This is one chapter which I always get as a topic of revision from the students who have completed their syllabus. Ionic, thermo, electrochemistry, these are main chapter. ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड कीटोन, थोड़ा सा ऑप्टिकल और आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब चीजें ना जो बच्चे बार बार आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस भी एज अ रिवीजन मांगते हैं कि सर थोड़ा सा फिर से समझा दो. आई वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द चैप्टर वाज गोइंग ऑन, सो वो पार्ट हमेशा आता है. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन अगेन. ये मैं हर बार बोलता हूँ, बट अगेन आई गेट द क्वेरी एट द लास्ट मोमेंट. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर ना, सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होगी ना, that there are so many cases, first thing. So like I'll tell you, I'll be dealing with 25-30 cases in this chapter practically. ठीक है, that's one. So there are so many cases. स्टार्ट के कुछ केसेस थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट दिखेंगे, बाद में धीरे धीरे मर्ज होने लगेंगे सब. ठीक है, दैट इज सेकेंड पॉइंट. सो दैट्स अनदर पार्ट. थर्ड पार्ट इज some cases will not have any impact on the later on वाले cases, और sometimes if you don't know, मान लो मैंने केस नंबर 15-16 पढ़ाया है, वो समझ में नहीं आया, बट इफ यू नो द केस नंबर 5 and 6 and the question is coming from the case number 5-6, so you will be able to solve that. ठीक है, सो इवन इफ यू सी दैट कि सर ने 25-30 केसेस पढ़ाए हैं, इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल द केसेस ना, बी वेरी स्पेसिफिक, आई एम क्लियर अबाउट दिस केस, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस केस. So that will give you a clarity and that will give you confidence also. हाँ ठीक है, सर ने 25 बताया ना, मेरे को 10 पता है, तो उस 10 से क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू सॉल्व इट. पहली चीज, विल ट्राई अवर बेस्ट फॉर ऑल द केसेस. बट बच्चों का ऐसा होता है कि बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री टुगेदर, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है बीच में कि इधर का किया, इधर का थोड़ा सा बैलेंसिंग छूट गया. तो बस द पॉइंट इज कि ड्यूरिंग क्लास डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू आर नॉट क्लियर जस्ट आस्क इट, दैट्स वन. ठीक है, फिर भी मान लो अगर रह गया तो दोबारा पूछ सकते हो डाउट्स में, डेफिनेटली. फिर भी रह गया तो हैव दैट फेथ कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, यू विल अगेन गेट द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड इट बेटर. बट बार बार ये एक बार चैप्टर खत्म हो जाने से ऑफिशियली आई विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस, बट फॉर यू दैट प्रिपरेशन विल गो ऑन, एंड दैट्स व्हाई बाद में भी कभी हो सकता है, कभी पूछोगे अच्छा यहाँ पर ये बताया सर, अब समझ में आया. That will be the case practically later on also. ठीक है, so now while dealing with this chapter, why this is important, that why this becomes difficult, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये चैप्टर एक तो पहली बात कंसेप्चुअल मैथमेटिकल सब है, दूसरी बात है इसका इम्पैक्ट तुमको बाकी चैप्टर्स में दिखेगा. एक झलक मैंने जीओसी में दिखाई थी तुम लोगों को, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, कौन सा रिएक्शन कंप्लीटेड मानते हैं, कौन सा रिएक्शन पार्शियल मानते हैं. सो आई टोल्ड यू वन लाइन दैट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड will react with conjugate base of weaker acid, that we were using time and again. तो वो बात बार बार यूज हो रही थी. बट उसके अलावा भी
you'll be having many chapters in which you will see the impact of this chapter. Like you'll be seeing a part of it in the volumetric analysis at the end of the chapter of volumetric analysis, when I'll be teaching you double titration. Okay, that will have one impact. Then later on, जब तुम जाओगे इन अ चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, भर भर के यूज होगा. लाइक अभी एक बैच में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, वो पूछने आए, मैंने उनको बताया होता है कि आयनिक बहुत यूज होगा, तो पूछने आए, मैंने बोला पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं यूज होने वाला है. So that electrochemistry, again, that is the chapter which you'll be asking for revision later on, because that is I call that chapter as a महासागर of all chapters. मतलब उसमें आयनिक काम आएगा, उसमें वॉल्यूमेट्रिक काम आएगा, उसमें जो मोल से पढ़ा है वो काम आएगा, थोड़ा बहुत थर्मो भी काम आता है. तो many chapters are going to be used in that chapter, और उसका अपना concept उस chapter का है. So electrochemistry is like an ocean जिसमें बहुत सारे chapters are going to form. ठीक है, that's one part. There is a chapter called solution and colligative property, वहां भी इसका यूज आएगा. कभी कभी तो अच्छे क्वेश्चन जब हम लोग एडवांस के डिजाइन करते तो उसमें भी हम लोग आयनिक को एंट्री करवा देते हैं. तो दिस इज लाइक ना, फैकल्टीज के लिए फेवरेट चैप्टर होता है, स्टूडेंट को समझ में आया तो फेवरेट है, नहीं तो सबसे वर्स्ट चैप्टर होता है. ठीक है, बट फैकल्टीज के लिए फेवरेट क्यों होता है? क्योंकि कहीं भी इसको यूज किया जा सकता है. कोई सॉलिड है ना, चैप्टर सॉलिड स्टेट का है, मैं कहूंगा सॉलिड को पानी में घोल दिया, नाउ वी हैव गॉट द आयनिक इक्विलिब्रियम का ऑप्शन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई व्हाट आई हैव डन व्हिच आई फेस्ड इन माय प्रिपरेशन ना, कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, क्योंकि कभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आई नो ऑल द केसेस. तो ढूंढते, अच्छा ये वाला पता है, बाकी तो पता ही नहीं कौन से केसेस हो सकते हैं, क्या क्या वेराइटीज हो सकती है. सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग ना, द फर्स्ट जॉब आई हैव डन in the ionic equilibrium, that I have divided it into various possible cases, and you will see that we will work in terms of cases, like ये case आया तो how to handle this, ये case आया तो how to handle this. But before entering into that ना, कि ये case आया तो how to handle this, बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर पता ही नहीं चल रहा है केस कौन सा है, बिकॉज एग्जाम में दे विल नॉट राइट ना ये केस का क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस, है ना. सो दैट विल बी द प्रॉब्लम फेस्ड बाय यू. सो व्हेनेवर आई एम डिस्कसिंग एनी केस ना, whenever I am giving you, like मान ले मैंने बोल दिया केस 1 ऐसा रहेगा, इसको ऐसे हैंडल करना है. If you read the question, first identify from your side that whether you are able to identify the case क्यों है, ये केस 1 में क्वेश्चन दे रहे केस 1 ही क्यों है. What was that sentence or the line or the word by which you will be identifying कि नहीं ये तो ये वाला केस. क्योंकि बाद में जाकर मैंने बोला कि बहुत मिक्स होगा, और उसमें सबसे पहली डिफिकल्टी, अच्छा अच्छा ये बफर का केस है क्या, ये तो पता ही नहीं था सर, यही नहीं समझ में आया कि ये बफर आना है ना. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी डिवाइडिंग द कंप्लीट चैप्टर इनटू वेरियस केसेस. द फर्स्ट जॉब फॉर यू विल बी, whenever I am teaching you the case and I am giving you the question, first question you should ask yourself first that whether I am able to identify कि ये इसी केस का क्वेश्चन क्यों है, and then if you are not clear you will ask. Is it okay? चलो, तो बिफोर एंटरिंग इनटू दैट महासागर ऑफ केसेस जो मैंने बोला है, उसमें जाने से पहले विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर सो दैट we can be equipped enough to enter into that zone of cases. So the first thing is ionic equilibrium. The name itself says कि it will have some ions and there will be some equilibrium. Simple. So that means we are going to deal with the reversible reactions again, because that those reactions only can achieve the equilibrium. है ना, first thing. Second thing, ions. तो ions का कुछ तो source होना चाहिए ना. We don't get ions किसी कंटेनर में free. Na plus ion किसी कंटेनर में रखा मिला है क्या? But if you have NaCl, it is having Na plus ion as well as Cl minus ion. That's why we need to talk about first the substances which are going to give you ions and what can be their properties or what can be their behavior in solution or in water. So basically, when I'm talking about ionic equilibrium, I'll be giving you first the basic idea, basic brief discussion about what are those substances which are going to provide you the ions. And there are some substances which may not provide you the ions. So this chapter will definitely be not about that, those type of substances which are not going to give you the ions. Hai na? So basically, ionic equilibrium, it is the equilibrium for reversible reactions in which one or more ions are involved. First thing, basic definition. What are the substances which are not going to provide the ions? Non-electrolytes. So we are not going to talk about anything about non-electrolytes in this chapter. Okay. So basically this chapter is about electrolytes. So electrolytes are the substances which are going to furnish the ions when they are added to the solution. Now they are having also two types.
there are strong electrolytes, there are weak electrolytes. When I'm talking about strong electrolytes, when they are going to be added into the water, they are going to be completely ionized. That means they will be 100% ionized. And if they are 100% ionized, that means in solution, there is no HCl. All of it has been converted into H plus and Cl minus. If there is no HCl anymore, then there should not be any reversibility. And that's why we'll say that for such type of reactions, you will not get reversibility. And that's why if you see reversibility ka sign is missing, it is single directional arrow everywhere. So these are the strong electrolytes which will appear in the chapter. But this chapter is not mainly about these substances because यहाँ तो reversibility नहीं है. Ions तो आए हैं, but reversibility is not there. So now, what are the substances which we are going to treat as strong electrolytes? So I'll divide it into three parts. We can have strong acids. I have basically given you because organic udhar chal hi raha hai. That's why I've added one organic compound also. But otherwise, practically जो इस chapter में मिलेगा HClO4, HBr, HI, HCl, HNO3, H2SO4. HClO3 rarely मिलेगा, but these are the important substances. I'll just highlight जो उनको प्रैक्टिकली दिखेगा बार बार क्वेश्चंस में. तो दीज आर द हाईलाइटेड अंडरलाइन सब्सटेंसेज जिसको याद रखना है कि HClO4, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 ये 6 बार बार तुम्हारे सामने दिखेंगे. देयर आर अदर सब्सटेंसेज आल्सो बट नॉट इंपॉर्टेंट. So these are the 6 important substances. If you see in the question, that means they are strong electrolytes, and that because they are acids, so they'll be called strong acids. Ionization of these acids will be considered to be complete or 100%. So ionization of these acids will not have any reversibility. So you are not going to get any ionic equilibrium for the ionization of these substances. Similarly, for the strong bases, we need to know group 1 के hydroxides. All of these are group 1 के hydroxides. And group 2 में practically we say calcium, strontium and barium के hydroxides. These are the hydroxides which are considered to be strong bases. That means ionization of these hydroxides will also be considered to be completed. ठीक है. प्रैक्टिकली क्या देखेगा उसी को मैं सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ूंगा. NaOH, KOH and BaOH twice. These are the practically found three strong bases in different various questions. They can give you anything, but these three are frequently appearing in the questions. ठीक है. Now, for these substances, I told you that they are not going to be having any reversibility. So there is no question of ionic equilibrium for the ionization of these substances. Is it okay? For salts, we consider all the salts in the solution are considered to be strong electrolytes if degree of ionization is not mentioned. If they are mentioned, then we'll consider that मान लो बोल दिया it is only 80% ionized in the solution. Then we'll consider कि ये भी weak रह गया. Anything which is having ionization less than 100% will be considered to be weak electrolyte. उसमें weaker stronger चलेगा. But anything which is not having 100% ionization will be considered to be a weak electrolyte. Simple word. ठीक है? Is it okay? Now, अब आते हैं उनकी बात जिसकी बात बार बार पूरे चैप्टर में भर भर के होगी. And these substances are called weak electrolytes which are going to have less than 100% ionization, and that's why the ionized form, that means the ions given by this electrolyte, and the unionized form will have equilibrium established, and that equilibrium will have some equilibrium constant. हाँ क्रिश कुछ पूछ रहे थे. सर जरा 1 मिनट ऊपर जाए ना. ओके नोट मत करो ना, मैं दे दूंगा, समझने पे फोकस करो ना. आई गिव यू दिस हाँ पीडीएफ है ना. मैं जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा, है ना. ठीक है. ओके. सो बेसिकली समझने पे ज्यादा फोकस करो. इफ यू अंडरस्टैंड इट ना तो नोट्स विल बी देयर विद यू. या फिर हाँ कभी सर भी मान मैं लो बाद मतलब में रेफरेंस की वो जरूरत पड़ेगी तो आई गिव यू. कभी हाँ बोलोगे भी ना बाद में सर स्ट्रॉन्ग वाला लिस्ट फिर से दिखा दो, आई शो. ठीक है. बट समझने पे ध्यान. सो नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि these type of electrolytes, so anything which is not strong acid, any acid which is not strong will be a weak acid. Any base which is not strong will be a weak base. All the salts were by default considered to be strong electrolytes, इसलिए salts को हमेशा strong ही लेंगे if they have not mentioned the degree of ionization. So that's why देखो मैंने एक weak acid का example दिया. This is weak acid. सो वीक एसिड के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है इसके आयनेशन के रिएक्शन का,
that is called Ka of acid. And for weak base, the ionization constant or the equilibrium constant is called Kb of base. Simple है. A stands for acid, B stands for base. Simple है. देखो salt यहाँ दिख रही है. But one more type of equilibrium you'll be getting in this chapter, in which whether it is a salt, acid or base, that can be sparingly soluble. That means that will not be completely dissolved. Only a part will be dissolved if you are adding. मान लो मैंने इतना सारा AgCl लेके पानी में डाल दिया ना, almost all of it will be at the bottom of container. Only a part of it will be dissolved. That means now there is an equilibrium established between the solid undissolved form and the aqueous ions which are dissolved form. And for that also equilibrium is established, and that's why there is reversibility in this part. And its equilibrium is called the Ksp of salt, which is also called solubility product of salt. Is it okay? So now after this point, when we'll start entering into the cases, ये Ka, Kb, Ksp दिखने वाला है पूरे चैप्टर. ठीक है? Is it okay, everyone? Now, when I'm talking about the ionization का percentage बार, so what will be the basically the parameter which is going to indicate the extent of ionization? जो अभी तक अपने लिए chemical equilibrium में the part which was actually degree of dissociation. In this case, because the substances are going to be ionized, the same term will be called here degree of ionization. Is it okay? Now, so degree of ionization का definition वैसा ही है, सिर्फ यहाँ dissociation को ionization बोलेंगे. So basically, degree of ionization is the fraction of moles consumed out of total moles available. ठीक है? मान लो A mole था, उसमें से X mole has been consumed, then X upon A will become the degree of ionization. In this chapter, because we are going to deal with aqueous solution most of the time, so that's why we'll be always working in terms of concentration. There is no question of partial pressure because we are not going to talk about a gas phase reaction. It will always be an aqueous phase reaction, and that's why if you see मैंने यहाँ पर concentration term में बात करना start कर दिया है, इसलिए देखो per liter moles की बात कर रहा हूँ. So मान लो if you have added per liter, if you have added C moles, then C is actually the concentration. Mole per liter is nothing but molarity. You know? So if you have added C mole per liter and only X mole per liter is ionized, then X upon C will become the alpha. Which means if I ask you that initial concentration, मान लो, if I say initial concentration was C, so then concentration at equilibrium, if I ask you, of that substance which is going to be ionized, equilibrium will be C minus X है ना, X is consumption, and X की जगह क्या लिख सकते हैं? If you see X by C को अगर मैं अल्फा लिख रहा हूं, so I can write X equals C alpha, which means it becomes C into 1 minus alpha है ना. So you'll see that I'll be using it frequently in the reactions. मैं सीधा लिखूंगा initial C था, at equilibrium C into 1 minus alpha. That itself gives you the idea that the degree of ionization is alpha, and that's why out of C, C alpha has been consumed, so the remaining is C minus C alpha, which can also be written as C into 1 minus alpha. ठीक है? ये सब basics हम लोग discuss कर रहे हैं, which I'm going to use frequently. Is it okay up to this point? Now, आगे का पॉइंट क्या है? ये जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं which are going to give you the ions, ये कहाँ आयन देने वाले? जब मैं इनको पानी में, वाटर में I am going to add them, है ना? So first, before understanding the behavior of these electrolytes, first understand the behavior of the water itself in which these substances are going to be added, है ना? तो पहले water की बात कर लेते हैं. What type of substance is water? So basically, I'll be talking about water, which is an extremely weak electrolyte. 3 idiots देखा है क्या? Start में current लगा था, याद है? But that was not pure water. That was a salty water, है ना? So salty waters are good conductor of electricity, but pure water is not good conductor. It is extremely poor conductor because
it is not going to give you ions in the solution practically. The number of ions in pure water will be extremely less, and that's why I've told you, ऐसा नहीं कि non electrolyte, it is extremely poor or extremely weak electrolytes. We'll see later the number किस exchange किस range में इसका alpha आने वाला है. But I told you earlier also कि by property we know that it is not very good conductor, extremely poor conductor, pure water I'm talking about. So basically it is extremely poor or weak electrolyte, which is going to give you the H plus and OH minus in the solution, but the degree of ionization of pure water will be very less. Okay, but still it is going to give you some H plus and OH minus. Now let's discuss about this H plus. If you remember chemical bonding में polarization पता है क्या? Anyone? What is that polarization? The partial dipole. Okay, फजांस रूल कुछ याद आ रहा है? Anything? Okay, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ क्योंकि आगे इसको यूज किया है. बेसिकली क्या होता है ना, when I say some substance is ionic in nature, substance is covalent in nature, then we'll be having like ionic में क्या बोलते हैं, there is Na plus, there will be Cl minus, है ना, there will be some cation, there will be some anion, है ना. So that type of thing is called ionic compound. If I talk about HCl, it will have H bonded with Cl. So now if you see this substance and this substance, this is also having some polarity because of electronegativity difference, है ना. So we start talking about the ionic nature in covalent compound, ठीक है, and that is expressed by dipole moment, है ना. So dipole moment of this substance, the magnitude will be given by this delta into the bond length. This is called dipole moment. So अगर ये completely ionic होता तो we should get something like this. तो जो इसका dipole moment आता, that would have been E times D, है ना. E is the electronic charge because plus one and minus charge होता. So that's why इसका जब percentage ionic character if they are asking you ना, even if it is predominantly covalent character, if they are asking, so we write delta into D, which is the observed or the actual dipole moment upon E times D into 100. तो इसी को हम लोग लिखते हैं mu observed upon mu 100% ionic into 100. That when we are talking about ionic nature in covalent compound, ठीक है. But right now I am saying that if I am having a cation, मान लो कोई B plus जैसा कुछ cation है and we are having A minus जैसा कुछ anion, ये ऐसा नहीं है कि ये प्योर चार्ज रहेगा. It will have some electronic distribution around it. It will have some electronic distribution around it. Normally cations are smaller than anion. There are some cations which are larger than F minus. Otherwise normally cations are smaller. अब देखो ना, ये जो है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा ना. Is it okay? If it is pulling this electron cloud, so electron cloud of this anion will get distorted like this. Okay, so इसका जरा सा होगा, ना के बराबर बोलते हैं, because the bigger one will get distorted by the smaller one, and that's why we say that cations are polarizing the anions का electron cloud. So we'll say it will have some polarity across this part, है ना, because electron density is becoming more this part, in this part electron density is becoming less in this part, है ना. So ऐसा होते होते you can have कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनका डिफ्यूज भी हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट. ओके, इफ इट इज एक्सट्रीमली डिफ्यूज, ऐसा हो गया कि दे स्टार्टेड शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड because they have started sharing their electron clouds. So we start talking about जो भी इसका distortion आ रहा है, that is bringing it from 0% covalent character to 100% के बीच में लेके जा रहे हैं ना. So we practically say it will have some ionic character also because of some distortion of the negative electron cloud. So some covalent character is also found in all the ionic compounds, है ना. Some कोवेलेंट कैरेक्टर. सर इसमें कंफ्यूज हो गया. क्या कंफ्यूजन है, बोलो. मतलब वो
I do not understand how like See, if I am covalent. having a cation, if I am having some anion, so cation will attract the electron, है ना? But their sizes are not same. So it will be like ऐसा जाएगा ना, नजदीक जाएगा ना, तो अट्रैक्ट होने के लिए it will become more confined in a smaller space near the cation, है ना? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो नॉर्मली आइडियली हम लोग स्फेरिकल जैसा मान सकते थे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा मान सकते हैं, इट विल नो लॉन्गर बी सिमेट्रिकल, है ना? एंड इफ दैट हैपेंस, तो ये क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कमिंग मोर एंड मोर क्लोजर टू द कैटायनिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड. If it starts distributing around the cation also, then we start calling it covalent. Is it okay? Because now it has been shared, है ना? जब ये शेयर होता है तो उसको कोवेलेंट बोलते थे यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे HCl में शेयर्ड हो रहा था, तो वी स्टार्ट कॉलिंग इट कोवेलेंट. बट ये जो आइडियल था, आइडियल वाज आयनिक. क्या कहते हैं, देर आर 2 पॉइंट चार्जेस और उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. ठीक है, बट दैट इज 100% आयनिक करेक्ट. But the practicality is far from that situation because these are not point charges, है ना? They are having some electronic cloud का distribution, and that's why any bond is not completely ionic or not completely covalent. They will have a percentage ionic character and covalent character in between 0 and 100. So which are predominantly covalent compound, उनका बोलते हैं कि उनका percentage covalent character is more than 50%, and that's why they are called covalent compounds. The one which is having 50% से ज्यादा ionic character, they will be predominantly called ionic compounds. ठीक है? So in this case we talk about कि polarization का extent कब ज्यादा होगा, and that's why you have been mostly जिनको पढ़ाया गया है उनके लिए फजान्स रूल आता है. That फजान्स rule says, it says कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना, that increases with increase in extent of this polarization, and this extent of polarization will be greater if charge upon size of cation is more, and it will also be proportional to charge into size of anion. Okay, clear है यहाँ तक? और भी फैक्टर्स हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन. उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं. बट द पॉइंट ऑफ रेजिंग दिस फजान्स रूल वाज, if you see, if I am having H plus free, what is it practically? H plus का मतलब क्या? Imagine it from H atom. What is H plus? What is H plus? H में क्या क्या था? There was a nucleus in which there was just one proton, and what is outside? There was one electron. If you have H plus, what does that mean? Electron has gone. It means क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस का मतलब क्या? सिर्फ प्रोटॉन है ना. चार्ज इज ओनली +1, बट इट इज ओनली प्रोटॉन, एंड दैट्स व्हाई इट्स साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर ना, एटम्स का साइज वी स्टार्ट सेइंग कि इट इज इन द रेंज ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज, है ना. इफ यू रिमेंबर फर्स्ट बोर ऑर्बिट तो 0.529 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं ना. तो एटॉमिक साइज इज कंसिडर्ड टू बी इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉम. बट न्यूक्लियस का साइज, इफ यू रिमेंबर, आया होगा रदरफोर्ड्स लॉ के टाइम पे, न्यूक्लियर साइज की बात होती है, दैट कम्स इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मी और फेम्टोमीटर. सो वॉल्यूम का आइडिया लगे ना, तो वॉल्यूम में दे विल हैव 10⁻15 का डिफरेंस. And that's why I'm saying कि if I am having H plus, its size is extremely small, and if you say for cation का polarizing power, चार्ज अपॉन साइज ज्यादा रहे तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा होगा. सो दैट्स व्हाई वी से दैट द पोलराइजिंग पावर ऑफ H plus is extremely high. The polarizing power of H plus is extremely high, और बाहर भरे पड़े हैं H2O के मॉलिक्यूल्स which are having electron clouds, है ना. So H plus ion can always polarize the surrounding H2O molecules, and that's why they will never be found in free state. They'll always be found to be associated with some water molecules with them. Is it okay? Clear है? Because H plus का polarizing power ज्यादा है. Why polarizing power is more? Because its charge upon size is very high.
size is very low, so that's why charge upon size is very high, and that's why extent of polarization will be very high. And if it is able to polarize the water molecules around it, it will get associated with those water molecules, है ना? And that's why H plus, free H plus doesn't exist in water, and that's why it will always be found to be associated with some water molecules. The simplest representation is H3O plus, in which we are showing just that one H plus is associated with one H2. But in general, you will always have H2O n times. Like I can also write H9O4 plus. This says H plus is associated with 4 water molecules. Hai na? Okay. So the simplest representation is H3O plus. So later on, wherever I mention H3O plus, understand that as H plus. Okay. So that's why it is also considered to be, अब एक H2O ने H plus और OH minus रिलीज किया, और ये जो H plus released है, that will be associated with another water molecule. So we can also treat it like the transfer of proton from one water molecule to the other water molecule. One has lost the H plus, another has got associated with that H plus. है ना? So this is also treated as transfer of H plus from one water molecule to the other. Okay, and that's why we can also write S3O plus plus OH minus. Is it okay up to this point? Any doubt? Any doubt? आगे बढ़ जाए. So let's see the calculation. So calculation वाले part में we'll see there is something called ionic product defined for water, and in general we'll define it for any liquid. So if I'm talking about ionic product, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम, जैसा मैंने बोला था कि C रहेगा तो C अल्फा कंज्यूम होगा, तो C into 1 minus alpha will be remaining, because I have already told you that alpha is going to be much less than 1. We know that practically. So that's why we can write alpha is much less than 1. So this can be practically written as C. Is it okay? Now, अब यहाँ पे there are two questions. One thing is at equilibrium, देखो ना यहाँ इसका कुछ K equilibrium रहा होगा ना. So we can write at equilibrium H plus into OH minus upon H2O will be K equilibrium. But if you see H plus into OH minus, I can also write it as K equilibrium into H2O, because the water ka concentration remains almost same, hai na? Even after achieving the equilibrium. That's why what we do now, we multiply these two terms and we make a new constant, and that is called Kw of water, and its name is ionic product of water. Is it okay? Any doubt? So basically, if I'm talking about pure water or any aqueous solution, this equilibrium will always be achieved. है ना? When the equilibrium is achieved, K equals Q तो लिखेंगे, and that's why we'll say in pure water or in any aqueous solution, we can write Kw will be equal to H plus into OH minus. That means in future, if I know H plus ka value and if they are asking you OH minus ka value, we can always write Kw by H plus will be OH minus. So that means in future, if I need H plus in any aqueous solution, we can write Kw by OH minus. If I need OH minus in aqueous solution, we'll write Kw upon H plus. ठीक है, और इसको बार बार यूज करूंगा मैं. Is it okay? Clear? Now in this case, because H plus and OH minus ka source is only water, in pure water, I am telling you, in pure water,
H plus and OH minus will always be equal, because the only source of H plus and OH minus is H2O, and it will produce equal amount of H plus and OH minus because the coefficients are same, है ना? Multiplication, if I say x into x is 16, what is x? It will be root 16 if I say x is greater than 0, then, है ना? So that means in this case we can say कि दोनों चीजें रूट के डब्ल्यू के बराबर होंगी, तभी तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे और मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू. इज इट ओके? नाउ सम नंबर्स. ये जो के डब्ल्यू का वैल्यू है ना, इसके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं. आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट. आई एम हैविंग ऑलरेडी द रिजल्ट, सो आई विल राइट द रिजल्ट्स एंड देन वील एक्सप्लेन इट आल्सो. So what are the important results here? First result is Kw is related to the equilibrium constant, and that's why its value will depend only on temperature. ये कई बार हम लोगों ने chemical equilibrium के टाइम पे कर लिया है कि for a given reaction with given representation, equilibrium constant depends only on temperature. And if you see this reaction ना, ये जो reaction मैंने लिखा है H2O giving H plus plus OH minus, इसका forward is endothermic. बिकॉज इसी का रिवर्स रिएक्शन हम लोगों ने इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे पढ़ा था. H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O. उस रिएक्शन का डेल्टा H, इफ यू रिमेंबर, -57.3 किलो जूल लिखते थे, है ना, और -13.7 के कैल लिखते थे. दैट वाज डिस्कस्ड इन इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. इसका मतलब है H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O वाज एक्सोथर्मिक, तभी तो माइनस लिख रहे थे. एंड दैट मींस H2O गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस इज एंडोथर्मिक. Is it okay? So if forward is endothermic, then again the result from chemical equilibrium is if you increase the temperature, Kw का value will be increasing, है ना? If forward is endothermic, temperature बढ़ाने से K बढ़ता है. And that's why we are saying the value of Kw, which is called self-ionization constant or ionic product of water, depends only on temperature, and its value will increase with increase in temperature because self-ionization is endothermic. Is it okay? Second point, we are not supposed to know the value of Kw at all the temperature, but we are supposed to know its value at 25 degrees C. It will be discussed throughout the chapter. It will be used throughout the chapter. So Kw ka value at 25 degrees C is 10 raised to minus 14. Now, if I say at a given temperature, if Kw is 1.1 into 10 raised to minus 14, what conclusion you can draw from it? Temperature greater than 298 Kelvin. Okay, because this value is greater than 10 raised to minus 14, है ना? And we discussed right now in the first point that if you increase the temperature, Kw will increase. That means this temperature must be greater than 25 degrees C. Is it okay? So that type of conclusion we are going to use later on. That's one part. In water, this is valid for pure water as well as in any aqueous solution. But जैसे ही मैंने this one equal to this one कर लिया, we are talking about only pure water, है ना? Because if some other source of H plus or OH minus is coming, then these two things will not be equal. But for pure water, definitely these two things are going to be equal, and that's why their value will be root Kw, which is having a value of 10 raised to minus 7. Because Kw at 25 degrees C was 10 raised to minus 14. So root Kw will become 10 raised to minus 7. So pure water के लिए H plus as well as OH minus का concentration at 25 degrees C will be 10 raised to minus 7. If you remember, pure water में मैंने H plus और OH minus दोनों के सामने C alpha लिखा था ना. Okay. Now, वैसे तो मैं मोल के टाइम पे करवा देता हूं. देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय जेई. Calculate the molarity of pure water and density was given as 1 gram per ml.
ये क्वेश्चन नॉर्मली मोल के टाइम पे करते हैं, जेई ने बहुत पहले एक बार पूछा, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इट वाज इन द सब्जेक्टिव, जब जेई सब्जेक्टिव हुआ करता था एडवांस वाला एग्जाम, तब की बात है। तो इसका पर्पस क्या है, इट सिंपली सेज how many moles of water will be present in its 1 liter, and that is the definition of molarity, है ना? So that's why if the density is 1 gram per ml, that means 1000 ml water will have 1000 gram water, and which means it will have 1000 upon 18 mole water, है ना? So 1000 ml is nothing but 1 liter. So 1 liter में these many moles are present, and that's why we'll say molarity का answer will be 1000 upon 18, है ना? Which means this C is nothing but 1000 upon 18 if you consider density to be 1 gram per ml. So we can write this was nothing but 1000 upon 18 alpha. And that is equal to 10 raised to minus 7 at 25 degrees C. At any general temperature, it will be root kW. So for pure water, we can say this 1000 by 18 alpha is equal to root kW, which is 10 raised to minus 7 at 25 degrees C definitely. So if I calculate the alpha, that's what I was talking about कि alpha बाद में discuss करके देखेंगे. If you see this becomes 18 into 10 raised to minus 10 more, 10 is the alpha. Now do you understand how smaller is this value? It says in these many water molecules, only 18 get ionized. Understanding the point? If I keep these many, this is 10 raised to 10. So out of 10 raised to 10 molecules, which means 10 billion molecules, है ना? With 10 billion molecules, only 18 are getting ionized. The remaining are unionized if I don't have anything else. बाद में तो देखेंगे और भी कम हो सकता है. But if I'm having pure water, out of 10 raised to 10 water molecules, only 18 are going to be ionized. Practically, it remains unionized, है ना? Almost unionized रहेगा. And that's why I was saying that pure water is almost unionized. That means it is extremely poor conductor of electricity, or it is extremely poor electrolyte. Is it okay? Now कुछ क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स में, असाइनमेंट्स में, व्हेन दे विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करेंगे या आयनिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, बट दे विल टॉक अबाउट सम अदर लिक्विड लाइक अमोनिया की बात करेंगे, फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे. आई विल जस्ट शो यू 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दोज सेक्शंस जहां पे तुमको दिखेगा कि दे विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट की बात, बट दैट सब्सटेंस विल नॉट बी वाटर. वाटर के लिए जैसा काम किया है वैसा ही दे विल एक्सपेक्ट यू टू डू फॉर other substances. तो basics clear है तो होना चाहिए. I am giving you 2 questions. See this first question. Try to solve this one. And if you see the options, सबसे पहला काम करना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस देखिए. If you see the options, that gives you the hint कि exact calculation करने की जरूरत नहीं है. This is in the range, है ना? सब देखो ना, 0.002468 ऐसा नहीं. You need not to be very exact. Approximate calculation करके भी काम चलेगा. Oh, sir, 4 into 10 power minus 3. मतलब Okay, that means you are saying B point option. 004. Okay, I'll wait for other people. जिनका हो गया है उनके लिए मैं सेकंड क्वेश्चन भी दे दे रहा हूँ. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. जिनका हो गया है सेकंड पे मूव कर जाओगे.
Harsh, you are saying the answer of the second question or first one? First one, sir. First one. Okay, I'm getting different answers. Okay, तब तक फर्स्ट कर देता हूँ जब तक बाकी लोग सेकंड कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में इट सेज K this time is the ionic product and that is this much into this much. If I'm talking about pure formic acid, I already told you that these two things will be equal to each other, है ना? जैसे H plus and OH minus was equal, so we'll say these two things will be equal, है ना? So now it says, पहली बात तो याद करो हम लोगों ने C alpha equals root KW लिखा था ना, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? C alpha will be root under K for pure formic acid. Okay, and then if I have to know the alpha, I need to know the value of C. And that's why first we need to calculate the C, and they have given you the density. And density says Cm cube is nothing but ml only. So 1000 ml will have 1220 gram of formic acid. Hai na? If this much formic acid is there, how many moles of formic acid will be there? If you calculate how much is the molecular mass, this is 12 plus 32, so 46 are. है ना? So these many moles of HCOH I'm getting. This is 1 liter. 1 liter is having these many moles, and that's why we'll say C is nothing but 1220 upon 46. And that's why we'll be writing 1220 upon 46 into alpha will be root under, the value is given here, 10 raised to minus 6. And that's why we will say, if I have to calculate the alpha ka value, if I have to calculate alpha, it will become 46 upon 1220 into 10 raised to minus 3. And that says it will become 46 को मैं क्या करता हूँ 4600 कर लेता हूँ. Then that this becomes 10 raised to minus 5. And then we have to express it in percentage. So that's why it will become 4600 by 1220 into 10 raised to minus 5 into 100, है ना? फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालने के लिए we'll convert that, and then we'll be getting, if you see this value very close to 0.4 जैसा दिखेगा, है ना? 0.3 से काफी ज्यादा दिख रहा है, 0.4 जैसा दिखेगा into 10 raised to minus 3 percentage. अच्छा सॉरी 4 जैसा, not 0.4, 4 जैसा दिखेगा approximately, very close. And that's why we can write this can be practically 0.004%. Okay. What is the mistake, Hers? Anurag and Geet has got the right answer. So I think कैलकुलेशन में मेरा वैल्यू डबल हो गया, पता नहीं क्यों. इसलिए तो कहता हूँ कैलकुलेटर मत यूज कर. Okay, I told you earlier also ना ये approximation वाला खेल है. And exam में you're not going to carry the calculator. Huh? So you'll be getting questions like this. Okay, second one. Prisha, you there क्या? Yes, sir. Understanding the points? Yes, sir. Okay. ये सब पहले से आता है कि नहीं आता? प्रिशा? सर आता था, भूल गई. Okay. But these are the things now you can't afford to forget. Okay, second one. Enough time given. We are talking about pure ammonia, and that's why these two ions, NH4 plus and NH2 minus, will be equal. Hai na? So, for pure NH3 or pure ammonia, we'll write this NH4 plus and like H plus was equal to OH minus. Hai na? So, these two ions are going to be equal,
and if they are equal, they will be equal to under root this K of NH3, है ना? And that's why we can write this will be equal to 10 raised to minus 50, which means it is giving you the molarity of NH2 minus in pure ammonia. In pure ammonia, molarity of this is 10 raised to minus 50. But it is not asking you molarity, it is asking you how many these ions, number of ions it is asking, not moles of ions, and that too not in 1 liter, it is asking in 1 ml. So we are saying the meaning of this thing is molarity, or we say this is mole per liter. So that means we are saying that 1000 ml is having 10 raised to minus 15 moles NH2 minus ions. That means 1 ml will have 10 raised to minus 18 mole NH2 minus ion. So how many ions are there? So this much into Avogadro number we need to write. Hai na? So this much, these many NH2 minus ions, mole hat jayega. So these many NH2 minus ions, which says it should be practically 6.022 into 10 raised to 5 NH2 minus ions will be present. And that value is very close to this one, D. Is it okay? So this was about the other liquids जिसके self ionization की बात कर रहा था मैं. But normally इस chapter में we are going to have aqueous solutions always, in which we'll be putting some electrolyte. It may be weak, it may be strong, and then we'll be talking about the concentration of ions. But while doing these discussions and these calculations, na, if you see the numbers are like, जैसे KW का value was coming 10 raised to minus 14 at 25 degrees C. थोड़ा भी टेम्परेचर आगे पीछे किया, लाइक मैंने टेम्परेचर बढ़ा के बात की थी, एंड इट वाज कमिंग 1 पॉइंट समथिंग इनटू 10 रेज़ टू minus 14, है ना? Like, and I could talk about some temperature at which its value will be 1.25 into 10 raised to minus 14, है ना? यहाँ देखो अल्फा कितना आ रहा है 1.8 into 10 raised to minus 9, H plus कितना आ रहा है तो 10 raised to minus 7, that is the molarity. So we are dealing with these type of numbers in which we are having either a form like 10 raised to minus a type का, या फिर b into 10 raised to minus a type का फॉर्म बार बार दिख रहा है ना? Is it okay? जैसे I told you that KW at 25 degrees C was 10 raised to minus 14, but if I talk about some temperature like 30 degrees C, 35 degrees C, it will be 1 point something into 10 raised to minus 14 जैसा हो जाएगा. That means in this chapter we are going to get frequently these type of numbers. जैसे स्टार्ट में देखो ना, मैंने बोला था एसिटिक एसिड के लिए K का वैल्यू कुछ रहेगा, है ना? We talked about that K of acid, Kb of base. These numbers we talked about Ksp of salt. These numbers like CS3COH का K at 25 degrees C will be very close to 1.8 into 10 raised to minus 5. Now I'm talking about these numbers, and I told you that we are going to have two types of number frequently coming in this chapter, and those numbers are not very much comfortable for us. We'll be having 10 raised to minus a type, or we can have something like b into 10 raised to minus a type number. ऐसा नंबर बार बार आएगा. Okay, and if you remember, जिन लोगों ने पहले से क्लास स्टार्ट किया होगा, I always talk about something called scale. Like if I ask you what is the diameter, if I say ये एक सर्कल है जो पेन के सामने दिख रहा है, what is the diameter of this circle, what will the idea of range, किस रेंज में होगा? Anyone? माइक्रोमीटर. मिलीमीटर्स. नहीं, माइक्रोमीटर तो नहीं है, अगर स्केल रखूंगा तो 1-2 मिलीमीटर तो आ ही जाएगा ना. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग मिलीमीटर्स तो आ ही अबाउट जाएगा. नाउ इन व्हाटएवर रूम यू आर देयर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ दैट रूम? इन फुट और मीटर्स. हाँ, फुट ओके, मीटर. सो अब देखो इसी दो क्वेश्चन में, आई विल नॉट टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, बिकॉज नॉर्मली मैं जब फर्स्ट क्लास लेता हूं तो आई टॉक अबाउट कि इफ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर मुंबई मेल लिविंग पीपल, इफ आई आस्क यू दादर स्टेशन से अंधेरी स्टेशन का डिस्टेंस विल बी हाउ मच, तो तुम अपने मन से कुछ किलोमीटर बोलोगे ना. इफ आई आस्क यू सन से लेके अर्थ का डिस्टेंस बताओ, तो यू टॉक अबाउट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड लाइट ईयर्स. अब इन सारे क्वेश्चंस में इफ यू सी इट केयरफुली, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनी यूनिट की कौन सी यूनिट में करना, but you started changing the unit. Why you are changing the units?
It is easier to हाँ, express तो लिखने के लिए. सिंपल तरीका क्या है, अपन बड़े आलसी लोग हैं। अपने को डिफिकल्ट नंबर नहीं जमता, ना बोलने में ना सुनने में, इंटरप्रिटेशन तो नेक्स्ट लेवल की बात होती है ना. सो व्हेन यू वांट टू say it, when you want to listen to it, when you want to get an interpretation of some number, you want an easier number, है ना, which is easier to handle, है ना. And that's why whenever you get the difficult ये ना number for your comfort, you start changing the scale. जैसे मैंने इसका सर्कल का ये डायमीटर पूछा, तुमने किलोमीटर में तो नहीं बताया ना. यू चेंज द स्केल कि नहीं, ये छोटा नंबर है तो इसको मिलीमीटर में बोलते हैं, तो विल बी गेटिंग 1 2 टाइप का नंबर. व्हेन आई आस्क्ड यू रूम का विड्थ कितना है, तो तुम फीट या मीटर में बोल रहे थे, बिकॉज इन फीट एंड मीटर यू विल बी गेटिंग सम नंबर लाइक 2 3 4 5 6 7, ऐसा है ना. बट अगर तुमने रूम का विड्थ बताना शुरू कर दिया सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, इट विल बी अ वेरी लॉन्ग नंबर. या किलोमीटर में बताना शुरू कर दिया तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा ना. So whenever we are going to deal with a very difficult number, which can be very large, which can be very small, we change the scale. Again, these numbers are not our numbers, है ना. 5.6 into 10 raised to minus 4 अपना नंबर नहीं है ये, अपना नंबर 2 3 4 5. So that's why while dealing with these numbers, उस समय साइंटिस्ट लोगों को भी लगा कि अरे बड़ा खराब नंबर्स दिख रहा है, let's change the scale. And that's why they come to a scale which is called, in general that is called pH scale. But वहां पे बहुत सारी चीजों Log का scale ना. yeah. So now basically if I change this number to a comfortable number ना, तो क्या करना होगा इसका, अगर मैं log ले लूं ना, if I say x is this much, तो log x will become minus a, है ना. स्टिल इट इज नेगेटिव, अपने को पॉजिटिव जमता है, तो इसलिए क्या करेंगे ना, अगर मैं माइनस लॉग एक्स ले लूं तो ये हो जाएगा ए. नाउ दिस इज आवर नंबर, है ना, 1 2 3 4 ऐसा. एंड दैट्स व्हाई लोगों को दिखा कि वी आर गोइंग टू गेट दीज टाइप ऑफ नंबर्स अ लॉट, एंड दैट्स व्हाई दे चेंज द स्केल एंड दे डिफाइंड समथिंग कॉल्ड पीएच स्केल. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीएच स्केल, what does it mean? It says if you are getting a number x, minus log of x will be called p of that x. So h plus के लिए, because in water we are going to get h plus and oh minus a lot, and that's why for pH it is defined as minus log of active mass of h plus. That active mass of h plus will also be equal to molarity, but for dilute solutions. For a highly concentrated solution, like if I say a solution which is having 2m HCl solution, 1 से ज्यादा हो गया तो वहां पर प्रैक्टिकली हम लोग कहने लगते हैं कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, वहां पे एक्टिव मास कैन नॉट बी टेकन एज द मोलरिटी. बट इफ कंसंट्रेशन, देखो थियोरेटिकली तो 0.1 से कम होना चाहिए तो डाइल्यूट होते हैं, बट प्रैक्टिकली 1 से भी कम रहा ना तो हम लोग उसको एक्टिव मास को मोलरिटी के बराबर वी कैन टेक इट प्रैक्टिकली. ठीक है, तो क्वेश्चंस में इफ यू आर गेटिंग 0.2 0.3 उतना ही लेने का, वहां लड़ाई नहीं. लेकिन जैसे 1 से ज्यादा हो गया ना, देन वी विल से एक्टिव मास विल नॉट बी इक्वल टू मोलरिटी. सो देन we'll have two options. Either they give you the active mass. If they have not given you, then we'll start saying कि ये molarity तो 2 है लेकिन active mass will take 1. If it is 2 3 2.5 ऐसा कुछ भी दे दिया ना, we start saying कि active mass will remain 1 if you don't give me the value of active mass. That's one point. So pH is minus log of active mass of H plus, which can be called minus log of H plus का concentration for dilute solution. Similarly, POH will be called minus log of active mass of OH minus, which can also be written as minus log of concentration of OH minus for dilute solutions. In general, I told you that, like, in general, if you are having some number x, then px means minus log of x. Like pkw, I told about kw now. If I have to deal with pkw, I'll say minus log of kw will be called pkw. pKa of an acid will be nothing but minus log of K of that acid. pKb of some base will be nothing but minus log of Kb of that base. Is it okay? Clear? This is the simple term. Now there are two special cases. I told you that we'll be dealing with a number like 10 raised to minus a जैसा या फिर b into 10 raised to minus a जैसा. उसमें बार बार इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. If you see 10 raised to minus a जैसा, तो p of that number will become a. Already discussed that. If I am having b into 10 raised to minus a जैसा, तो सीधा a minus log b कर देने का है. यहां जो दिखे उसको पहले लिख दो और माइनस करके log of this बच गया.
So if I am having x is equal to 2.5 into 10 raised to minus 3, so I'll write p of x will be simply 3 minus log 2.5. Okay? If I'm having x is equal to 5.6 into 10 raised to minus 5, so I'll write p of x will become 5 minus log 5.6. Simple. Is it okay? सॉल्व करो जरा. ओके इतना नहीं फाइनल बताना होगा. सो वी नीड सम वैल्यूज है ना. सो आई विल गिव यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज. स्टार्ट के 3-4 प्राइम नंबर्स याद है ना, तो वी कैन मैनेज एनी अदर नंबर. So log 2 is very close to 0.3. Log 3 is very close to 0.48. Log 5 is ऐसे तो 0.699 होता है, but we can take practically 0.7. Log 7 is very close to 0.84 या 0.85 ले सकते हो. Log 11 is very close to 1.04. इतने से लगभग मैनेज हो जाएगा. बाकी लॉग के रूल्स आते हैं ना सबको. लॉग के रूल्स में कहीं कंफ्यूजन है? लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए इंटू बी. लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाय बी, है ना. ये सब लॉ आते होंगे. ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज मोलरिटी ऑफ H plus is So 2.5. 3.6. ओके ओके लेट्स सी. सो pH अभी मैंने शॉर्टकट बता दिया. इधर जो दिखा उसको पहले लिखो. सो विल राइट 4 माइनस लॉग ऑफ दिस. सो लॉग 2.5. Now that will become log minus, this can be written as 5 by 2, है ना. And that's why we can say this will be log 5 minus log 2, and we know these values, है ना. So it is 4 minus log 5 is 0.7, this is 0.3, so that becomes 4 minus 0.4, that is 3.6. Okay, second one. Any doubt? Second one. Point 54. Okay, कैलकुलेटर यूज किया. नहीं सर, बिना कैलकुलेट. Okay, so Geet is saying 0.55. Okay, let's see. pK of CS3COH minus pK of, that is PHCOH बोल दूं या C6H5COH बोल दूं, that is same. So that will be, if you see, this will become 5 minus log 1.8, है ना, and this will become 5 minus log 6.4. So ultimately it becomes 5 will get cancelled. Ultimately it becomes
log 6.4 minus log 1.8. So that can be written as log 64 by 18, which is log, simplify kar lo to 32 by 9. So we can write it as 5 log 2 minus 2 log 3. Now if I put the values, 5 log 2 is 5 into 0.3, and इसके लिए मैंने जो number दिया that is 0.48 दिया अभी के लिए. So this becomes 1.5 minus 0.96. So that becomes 0.54. Okay. मतलब value is very close, but if the values are given na, to use that value. That's one point. But if you see, this is coming positive, है ना? It means we are saying, देखो ना K का जो value दिया हुआ था ना उसके हिसाब से K of CS3COH was less than K of PHCOH. Then if you see, इसका मतलब pK of CS3COH is coming more than pK of PHCOH. And what does it mean? जिसका K ज्यादा है उसको stronger acid बोलते हैं. So the one which is stronger will have greater K value but lower pK value. That is another point. Any doubt? Now let's talk about nature of aqueous solution. That means if you put some substance in water, what will become its nature, whether it will be acidic, basic, or neutral. When I say neutral, it doesn't mean electrical neutrality, because the substance will always be net neutral. Whatever you add to it, na, net charge तो हमेशा ही zero होगा ना. If you are putting NaCl, Na plus जितना जा रहा है उतना ही Cl minus जा रहा है, तो net charge is always zero. So any aqueous solution is always electrically net neutral. But when we say a solution is acidic or basic or neutral, it means the balance of H plus and OH minus. If H plus is equal to OH minus, we start saying that it is neutral. When H plus becomes greater than OH minus, we start calling it acidic. When OH minus becomes greater than H plus, we start calling it basic. Simple सा मतलब है. So that means if I want to know what is the nature of an aqueous solution, we'll compare H plus and OH minus, है ना? So now for any aqueous solution, I already told you, for any aqueous solution or pure water, ये equilibrium तो हमेशा ही रहेगा ना. And if this is the equilibrium, this relation will always be valid. And इसी में क्या किया है ना, log लगा के -1 से multiply कर दिया है. So we are getting this relation. Is it okay? Now we can have a solution acidic, basic or neutral. So now इसका 3 केस बनेगा. Case 1, if it is a neutral solution, we'll say H plus is equal to OH minus. तभी तो neutral बोला है. And if these two are equal, they must be equal to Kw ना. And Kw का value at 25 degrees is 10 raised to Kw is 10 raised to minus 14, so root Kw will be this much. Okay. Now, if I'll apply the log and then minus, then this will also give you pH will become equal to POH, and इसका log लगा के minus लगाओगे ना, you'll be getting half pKw. And this half pKw will have value 7 at 25 degrees C. Is it okay? So when I write this relation, it is always valid for any neutral solution. When I write this is equal to 7, that is valid only at 25 degrees C. So if they change the temperature in the question, just be careful. This 7 wala point will not be valid, but this will always be valid. Is it okay? And that's why if I talk about the case 2, in which I am saying that if a solution is acidic, for acidic solution, what should be greater and what should be lesser? Acidic solution mein concentration of H plus should be greater. Now if H plus is greater ना, तो देखो ना दोनों बराबर थे तो दोनों root KW थे. The one which has become greater than OH minus, तो फिर H plus को root KW से ज्यादा होना होगा and OH minus को root KW से कम होना होगा. Just I am giving you an example. मान लो X into Y जो था ना वो 36 था. अगर दोनों बराबर है तो 6 into 6 was 36 है ना.
इफ आई से x को y से ज्यादा होना है, लाइक x को अगर 9 होना पड़ेगा तो y को 4 होना पड़ेगा ना. दैट मीन्स इफ आई से दिस वाज 6 का स्क्वायर है ना, तो अब अगर एक को दूसरे से ज्यादा होना है तो उनको रूट ऑफ 36 से एक को ज्यादा होना तो दूसरे को कम होना पड़ेगा ना. एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इफ आई एम हैविंग एन एसिडिक सॉल्यूशन, दिस विल बी द रिलेशन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 25 degree C, then it will become H plus greater than 10 raised to minus 7, OH minus less than 10 raised to minus 7, but that is valid only at 25 degree C. If I apply pH वाला part, so ये साइन देखो ना, जैसे मैं log लगा के माइनस लगाता हूँ साइन will become reverse. That's why we'll say pH will become less than half pKw and POH will become greater than half pKw. At 25 degree C, यही जो हाफ pKw है इसका वैल्यू हो जाता है 7. But this is at 25 degree C only. तो ये जो pH का 7 से ज्यादा कम होना सीखा है, तो always remember that whoever has taught you that part, it was valid only at 25 degree C, not at any general temperature. So when we say pH less than 7 is acidic, we are talking about 25 degree C. At any other temperature, this statement will not be right. Is it okay? Clear a point? Similarly, जो रिलेशन यहाँ आया इसी का ठीक उल्टा आ जाएगा केस 3 में. If I am talking about basic solution, so ठीक उल्टा, H plus will be less, OH minus will be greater, and that's why we will say H plus will be less than root Kw, OH minus will be greater than root Kw, and this is having value 10 raised to minus 7, but at 25 degree C only. Similarly, pH के term में, now pH will become greater than half pKw and POH will be less than half pKw. This is having value is equal to 7, but at 25 degree C only. Is it okay? So I have summarized this whole thing in a table, and that table is the final destination. Whenever you have to revise it, just refer this table. I have completed it for all the cases at any general temperature as well as 25 degrees. In this neutral solution or pure water के लिए H plus OH minus will be equal, and that will be equal to root Kw. pH will be equal to pOH, and that will be equal to half pKw. At 25 degrees C, यही root Kw becomes 10 raised to minus 7. 25 degrees C पे half pKw becomes 7. Is it okay? Acidic solution में H plus will be greater than root Kw, OH minus will be less than that. pH will be less than half pKw, pOH will be greater than that. At 25 degrees C, at 25 degrees C सिर्फ यही याद रखना है, root Kw is nothing but 10 raised to minus 7 and half pKw is nothing but 7. ठीक है, और फिर उसको वैल्यू को रख देना उधर. Is it okay? Any doubt? If you don't have any doubt, then I'll ask you the question. Solve this question.
Okay. Trisha has got the answer. Anyone else? So 1 second. Okay. Okay, Chris has got the answer. Harsh has got the answer. Okay. Sir, is it C? Okay, Anurag has got the answer. Okay. Now, basically, there are multiple ways to do it, है ना? एक तो एच के डब्ल्यू पता है तो रूट के डब्ल्यू निकाल सकते हैं. आई प्रेफर दैट मेथड इफ यू कैन सी इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर जैसा चीज है ना. इफ इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू गेट द रूट आई अवॉइड डूइंग दैट. बट यू कैन सी मैंने सेट करके जानबूझ के दिया 1.44 का स्क्वायर रूट विल बी 1.2 है ना. एंड दैट्स व्हाई इन दिस केस व्हाट आई विल ट्राई टू डू, I can see this one as kw is 10 raised to minus this one. That means root kw is 1.2 into 10 raised to minus 7. Okay. Now again I am having two choices. या तो ph से h plus निकाल दूं या फिर root kw से मैं half pkw निकाल दूं. Both of the methods will be right. So now if I write ph is 7, which means h plus will be 10 raised to minus 7. 10 रेज टू माइनस ए का पी होता था ए है ना. एंड दैट्स व्हाई अगर pH इज 7 सो h प्लस इज 10 रेज टू माइनस 7. नाउ आई कैन कंपेयर दिस h प्लस which is 10 raised to minus 7 or I can say this is 1 into 10 raised to minus 7 is less than root kw है ना. If this is less, so this was basic solution है ना. h plus less than root kw was basic solution. So we'll say this is a basic solution. Now, first thing, so this is not acidic. इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है. तो नॉट एसिडिक, नॉट न्यूट्रल, सो दैट्स व्हाई H प्लस विल नॉट बी इक्वल टू H माइनस. बेसिक हो सकता है. व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट? Not true. व्हाई नॉट ट्रू? Because this value is greater than 10 is to minus 14. I told you that if you increase the temperature, value of Kw will increase, and that's why the value greater than 10 raised to minus 14 can be obtained at a temperature greater than 25 degrees here, na? And that's why not true. So this will also be rejected. Is it okay? या फिर अगर मुझे ये भी निकालना होता ना तो देखो दूसरा मेथड क्या था. आई राइट हाफ पी के डब्ल्यू विल बी 7 minus log 1 and that I can calculate by 7 minus this is log 6 by 5 है ना. तो log 6 will be log 2 plus log 3.78 and log 5 is 0.7 so 0.08 and that's why it is coming 6.92. So there is another method and that says this time we can get pH is greater than half pKw and that is the case again for the basic solution. That is another method. Any other method you have used? किसी और ने कोई और मेथड यूज किया क्या? सेम मेथड है ना. वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट ओ एच माइनस है ना. एच प्लस ओ एच माइनस कंपेयर कर सकते थे. ओके, दैट इज अनदर वे. या पी एच पी ओ एच कंपेयर कर सकते थे. टेल मी दिस वन. गीत, व्हाई यू टोल्ड मी बी एंड सी? So I wanted to type B and D, अच्छा, but D भी मतलब wrong था, but मुझे हाँ समझा तो वो नहीं. उल्टा हो गया ना क्योंकि टेम्परेचर हाँ, बढ़ाने से केडब्ल्यू विल इंक्रीज है ना. yeah. ओके, हर्ष हैज गॉट द आंसर.
Okay. Harsh and Chris are giving the different answers. Okay, let's see. So when temperature is increasing, है ना? When temperature is increasing, we say Kw will increase. If Kw is increased, so root Kw will increase. And if root Kw is increased, half pKw will decrease now. And for pure water at any temperature, pH was equal to half pKw. That means if you are increasing the temperature, pH of the solution or pH of pure water will decrease, not increase. Is it okay? H plus will increase, or we can say half pKw, root Kw will increase, but half pKw will decrease, and that's why pH will decrease. So we'll write this will decrease. What about the nature of solution if pH is decreasing? 25 degrees C पे pH was 7 है ना? Now pH has decreased. What will become the nature of the solution, nature of this pure water? सर बट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 70 डिग्री सेल्सियस पूछा है ना, तो न्यूट्रल ही होना चाहिए, Why neutral? बिकॉज 70 डिग्री सेल्सियस पे ही हम तो मेजर कर रहे हैं ना. Okay, I told you just know that at any temperature pure water के लिए तो H plus और OH minus हमेशा ही बराबर होते हैं ना, and if they are equal they are still neutral, and that's why we'll say this is still neutral. So pure water is neutral at any temperature, है ना? Pure water will always be neutral at any temperature. Solve this one. There are 5 questions, not options. Okay. सर 19 का लॉग क्या होगा? 19 का log आ रहा है. हाँ सर, थर्ड वाले में नहीं आएगा, आप ही देख लो. Okay. Can you avoid that? ओके, वैसे तो कर सकते हैं हम लोग. It will be in between 18 and 20 है ना? Log 18 you हाँ can manage हाँ, ना? Log 20 यस you can यस, manage. 20 भी कर इसके सकते बीच हैं. में देखोगे यस, बहुत कम का डिफरेंस आता है. लॉग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. ठीक है. Log 18 if you manage it will be 1.26 जैसा आएगा. Log 20 will be 1.3 जैसा, तो 1.28 जैसा कुछ रख सकते हैं. Let me check नंबर कैसा आता है. Log my guess is 1.28. It is coming 1.2787, तो that is 1.28 जैसा है ना. ओके. ठीक है. That's why I told you if you just remember these numbers जो मैंने स्टार्ट में दिए हैं उससे बाकी सब मैनेज हो जाता है.
Okay. Risha, you have given the answer of which question? Okay. All 5 you have given. No? Okay. सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. That's not good. All of you have got totally different answers. जिन्होंने भी रिपोर्ट किया है. सर मैंने भी भेजा. Okay. I mean second option, no sir. हाँ. नहीं, these are not options. These are the questions. For each question you have to say the नहीं sir, nature of. actually I was doing that earlier question. ये कभी हुआ? Okay, okay, okay. चलेगा. सर एक मिनट, आपने कभी किया ये क्वेश्चन? हाँ. ये क्वेश्चन आपने कभी किया? कौन सा? ये क्वेश्चन 3. 3 दिया हुआ है, बहुत देर से दिया हुआ है. सर मैंने एक मिनट. हाँ सर, 2 मिनट दोगे क्या सर? चलेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम. सर मैंने मेरा सेकंड का आंसर चेंज किया. ओके. ओके. अभी हम लोगों ने केस में एंटर भी नहीं किया है. ठीक है, वी हैव नॉट इवन एंटर्ड इनटू द केसेस. When I say that 25-30 cases are there, na, every time we'll be getting pair of cases which can be handled in similar manner. जैसे मैं एक दूंगा strong acid का केस, तो pair of it will be strong base का केस. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा. When I say 25-30, तो it will be 12 to 15 cases, pair of cases. That I'll say. Okay. तो मैं मेरा 1 का भी चेंज किया. Still you all are getting, I think, कि अलग अलग टाइप के आंसर्स तो मिल रहे हैं. Okay, let's see. Anurag, any update? Yeah sir, just I'm on the second one. Okay, चलेगा. तब तक I am giving you the basic idea. If I have got this KW now, I'll always check whether it is difficult to get the square root of it or it is simple. That's first. ठीक है. तो if I see, मैं जब क्वेश्चन देता हूँ जानबूझ के परफेक्ट स्क्वायर बना के देता हूँ, so that you can get an easier answer. So KW is विदाउट स्क्वायर रूट के भी काम कर सकते थे, बट इफ इट इज इजियर तो मैं वो निकाल के भी चल सकता हूँ. दिस कैन बी रिटन एज 64 into 10 raised to minus 16, and that's why root kw is easier to calculate. That's why I'm calculating it. Otherwise मैं avoid करता इसको. So this will become this much, or we can also say 0.8 into 10 raised to minus 7. Now we have first question in which it says pH is 7. Now या तो मैं pKw निकाल दूं, हाफ pKw निकाल के रख लूं पहले से. If you want to do that वो भी चलेगा. मैं सब निकाल के रख दे रहा हूं. Whatever you want to compare ना, you can do that. 7 minus log 0.8. So that will become 7 minus log 8 by 10. Log 8 is 0.9. Log 10 is 1. तो minus 0.1 आ जाएगा. And that's why this will become 7.1. Which means अब देखो डिफरेंट पॉइंट्स है कंसीडर करने के. वॉट एवर यू वांट टू डू ना कर सकते हो. जैसे पहले में आई कैन राइट pH is 7 which is less than half pKw ना. So if that type of thing we are getting, I'll say this is an acidic solution. Or we can write pH is 7, so H plus is 10 raised to minus 7, which is greater than root Kw, because root Kw is 0.8 into 10 raised to minus 7. So that also says it is acidic solution. Mistakes? Harsh? मैंने हाफ नहीं किया. ओके. सो pKw से कंपेयर नहीं करते, हाफ pKw से करते हैं. और अदरवाइज विल कंपेयर द आयन का कंसंट्रेशन विद रूट Kw. ठीक है. सो दैट्स फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज इफ आई एम हैविंग POH equals 7, यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं. दिस इज लेस देन हाफ pKw.
जब pH लेस देन हाफ pKw आया था तो एसिडिक बोला था, pH हाफ लेस देन हाफ pKw आ रहा है, विल कॉल इट बेसिक. नाउ इफ यू रिमेंबर, अपन को बचपन से ऐसा पढ़ाते रहे ना, pH 7 है तो न्यूट्रल है. Now in these cases we are not getting a neutral because we are not talking about 25 degrees. तो जो पढ़ाया वो गलत नहीं था, that was having a limited part that they were talking about 25 degrees, है ना. Okay, now the third one is H plus has been given. Now we can directly compare it with root KW. So H plus which is 9.5. Chris ये देखो कैसे मैंने मैनेज किया है. And you have to learn that कि if you avoid that unknown value ना, तो ऐसे कैसे करना है. तो H plus पता है, root KW पता है, we can compare them, है ना. तो H plus is this much and that is greater than root KW because root KW is 8 into 10 raised to minus 8. इतने से पता चल गया ना कि this is acidic. H plus greater than root KW आ रहा है. This is हाँ acidic. सर, हाँ समझा. You don't have to do that log wala. Okay, fourth one. If you see OH minus is given, again we can directly compare it. This is 10 raised to minus 8 and this is exactly same as root KW. So we'll say this is neutral. And the last one, fifth one is pure water. Abhi just bola tha, pure water is always neutral. So this is neutral. है ना? Is it okay? Now if you see, if I say ये temperature 25 degrees से ज़्यादा है या कम है? Is it greater than 25 degrees or less than 25 degrees? Less. Why? Because at 25 degrees C, it's 1 into 10 raised to minus 14. This is 10 raised to minus 15. Okay, so this is 0.64 into 10 raised to minus 14, which is less than 1 into 10 raised to minus 14. है ना? So we'll say, because of this value, we can say the given temperature is less than 25 degrees. Now, if you see this thing, if I just try to draw this on a scale, if I draw the pH scale, and if I say, अगर मेरा temperature 25 डिग्री सी था ना, तो हाफ pKw का वैल्यू 7 था, तो 7 से इधर बेसिक हुआ, 7 से कम pH हो गया, तो एसिडिक हुआ है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट pH स्केल. इज इट ओके? क्लियर है? एंड दिस वाज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी. दिस वाज न्यूट्रल. अभी जस्ट देखा है कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर ग्रेट लेस देन 25 डिग्री सी किया, देन यू कैन सी कि ये जो पॉइंट था ना, हाफ pKw का वैल्यू, दैट हैज शिफ्टेड लाइक 7.1 आ गया था ना. दिस इज द न्यू न्यूट्रलिटी पॉइंट. इज इट ओके? सो this is half pKw now. This time pKw was half pKw was equal to 7. Now it has become greater than 7, and that's why all this region including pH equals 7 has become acidic, including pH equals 7. And now इसके बाद का जो solution है that will become basic. Is it okay? इसी का ठीक उल्टा करते, if I write T greater than 25 degree C, लेस पे अगर राइट मूव किया था तो ग्रेटर पे लेफ्ट मूव कर जाएगा. सो दिस विल बिकम द हाफ pKw का पॉइंट. सो वी विल से नाउ ये 7 जो था ना, दैट हैज बिकम बेसिक रीजन में आ गया ना. दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक. I'll just show this 7 wala point because we are too much obsessed with this 7. So this is not always neutral. यहाँ पे this has become acidic. यहाँ पे the same point has become basic, है ना. So that always depends ki at what temperature we are working. If we are working at 25 degrees C, we say pH equals 7 is neutral. But जैसे temperature is not equal to 25 degrees C,
If it is less than 25 degree C, then pH equals 7 will become acidic because the half pKw ka value has become more than 7. And if I'm talking about a temperature greater than 25 degrees C, then half pKw has become less than 7, so pH equals 7 will become basic. Is it okay? मैंने इसको summarize करके I have written it. So I'll just give you the result, conclusion. ये जो अभी discuss किया, this was the conclusion. So if I'm talking about 25 degrees C, half pKw का value is 7, and that's why pH equals 7 is neutral. But if I'm talking about temperature greater than 25 degrees C, half pKw has become less than 7, so pH equals 7 has become basic solution. And if I'm having temperature less than 25 degrees C, half pKw is greater than 7, so neutral point has moved rightward, so pH equals 7 has become acidic. Is it okay? So this was the conclusion of about the neutral point with shift in the temperature, or the point of neutral point at pH scale ka shift with the temperature. Okay. Now there are two effects जिसकी बात आगे करेंगे हम लोग. One effect is common ion effect, another effect is, we'll say, Oswald dilution law. ये दोनों बहुत ही frequently we are going to use, particularly this common ion effect we are going to use it frequently in the whole chapter, and that's why समझना है कोई नई चीज नहीं है, पुराना माल नए लिफाफे में चिपका रहा हो तुमको. That means this is nothing but nothing like new concept जो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में लाशेटे और लीचेटेलर प्रिंसिपल के टाइम पे पढ़ा था. Same thing we are going to discuss it here. So if I say common ion effect, what does it mean? एक बात बताओ ना, if I am having a reaction CH3COOH giving CH3COO minus aqueous plus H plus aqueous, and if I add H plus in this solution, कैसा शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड होगा. मोल्स ऑफ CH3CO माइनस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएंगे. कम हो जाएगा. यू नो द कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. सो व्हाट डज इट से? अब इंग्लिश में बड़े बड़े लैंग्वेज में सीखते हैं यही बात. अभी बाकी को समझ में आया ना? अनुराग, यू देयर? यस सर. क्या समझ में आया जो मैंने बोला अभी? यस सर. मैंने एक रिएक्शन दे दिया. आई हैव जस्ट आस्क्ड यू वन क्वेश्चन. इफ आई ऐड H plus in the solution, what type of shift it will have? It will have backward shift because you have added H plus, है ना? That is the product in aqueous phase, है ना? So that's why it will have backward shift, and through backward shift CH3COH जितना आयनाइज होना चाहिए था उतना आयनाइज नहीं रहेगा, है ना? Because we have got backward shift, so degree of ionization of CH3COH will decrease, and as a result the ion which is not common, which is CH3CO minus in this case, will have less concentration in the solution, है ना? So that is called common ion effect. देखो language क्या है? Addition of a source of common ion in solution containing a weak electrolyte causes decrease in the degree of ionization of the weak electrolyte, and as a result concentration of ion of weak electrolyte which is not common is decreased. Simple. Is it okay? तो इतनी इजी बात थी. अब इसी में एक पर्टिकुलर नोट मैंने क्या लिखा है, मान लो मैंने जो ऐड किया वो HCl था, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड वाली लिस्ट में था. नाउ इफ आई से, मान लो एक सॉल्यूशन में HCl है, क्या मैं H प्लस ऐड करूंगा तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा क्या HCl वाले का? विल देयर बी एनी बैकवर्ड शिफ्ट फॉर द आयनेशन ऑफ HCl? No, व्हाई नॉट? the reaction isn't reversible. हाँ, because there is no reversibility. वो लीच एटेलियर या लाशेटे was valid for only for reversible reactions, है ना? So that's why common ion effect can be applied by a strong electrolyte, but it will not be applied to the ionization of strong electrolyte, है ना? Strong electrolyte जो है वो common ion effect लगा सकता है. Like if I add HCl, that is also the source of H plus, so that will decrease the degree of ionization of acetic acid. But addition of acetic acid or presence of acetic acid will not affect the degree of ionization of HCl, है ना? Is it okay, everyone? So that was the point I told you, that common ion effect can be imposed on weak electrolyte, but by strong as well as weak electrolyte. For given weak electrolyte, अब इसमें भी क्या है?
जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट आएगा उतना ज्यादा कॉमन आयन लेकर आएगा, उतना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट इंपोज करेगा। इट्स लाइक गरीब ज्यादा सप्रेस करेगा, सॉरी अमीर ज्यादा सप्रेस करेगा और गरीब ज्यादा सप्रेस होगा। सिंपल। तो स्ट्रॉन्गर का मतलब अमीर, वीकर का मतलब गरीब, सिंपल सी बात है। ओके, सो दैट इज वैलिड हेयर ऑल्सो। सो जस्ट आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, इसमें से आइडिया लग जाएगा क्या अप्लाई करने का है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू विल गेट द आइडिया। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे हम लोग। दिस टाइम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट किस पे इफेक्ट आएगा, कौन इफेक्ट लाएगा और कितना इफेक्ट लाएगा। दैट मीन्स क्वालिटेटिवली ज्यादा कौन लाएगा, कम कौन लाएगा, ज्यादा किस पे आएगा, कम किस पे आएगा। इस पूरी कहानी में मैंने वाटर को हटा के रखा है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इग्नोर द कॉमन एंड इफेक्ट। ऐसा नहीं कि इग्नोर किया जाता है, इस आंसर करने में इग्नोर दैट पार्ट ना, व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब तो वाटर ही है, ठीक है। Okay, so I have discussed, I have written some of the common ion effects. तो 4 बताना है जहां पे लगेगा। तो डेफिनेटली इफ आई से HCl लगाएगा CH3COH, HCl will impose common ion effect even on HCOOH. Even HCOOH will impose common ion effect on CH3COH. Even CH3COH will impose common ion effect on HCOOH. किस पे नहीं लगेगा, दैट इज व्हाट, किस पे नहीं लगने वाला है, CH3COH on HCl, HCOH on HCl. उस पे नहीं लगेगा। हाँ, आई एम आस्किंग यू, कॉमन आयन इफेक्ट विल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन, किस पे it will इम्पोज not be नहीं, imposed on HCl, right? ऑन HCl बाय व्हाट, तो HCOH और CH3COH है ना, बिकॉज कॉमन आयन इफेक्ट इज नॉट इम्पोज्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इज इट ओके? नाउ आई एम आस्किंग यू सेवंथ वन, इफ आई आस्क द मैक्सिमम कॉमन आयन इफेक्ट विल बी इम्पोज्ड बाय व्हाट एंड ऑन व्हाट। HCl on CH3COH. सबसे अमीर HCl, सबसे गरीब जिसका K कम है, दैट इज CH3COH। इज इट ओके? अगर मैंने वाटर बोल दिया तो सबसे ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट तो वाटर पे लगेगा, दैट इज द एक्सट्रीम, द पुअरेस्ट इलेक्ट्रोलाइट और वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट अमंग ऑल दिस थिंग्स, है ना, इसलिए मैंने वाटर को इग्नोर करने बोला है। नाउ इफ आई से एट्थ वन, व्हाट विल बी योर आंसर? Greater than. That means you are saying acetic acid will impose more common ion effect on HCOH than the common ion effect by HCOH on CH3COH, that you are saying? No, no, opposite, no? नहीं ना, ये गरीब है, Oh, CH3COH sorry, is sorry, imposed on, sorry, then will be less than, है ना। Is it okay? The stronger electrolyte will impose more common ion effect. The weak electrolyte will face or will be suffering more common ion effect, है ना। Is it okay, everyone? Krish, Anurag, Prisha, am I clear? Yes, sir. Okay, Anurag. यस सर। चलो ठीक है, एक छोटी सी चीज और रह गई है, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, 2 मिनट में एंड करते हैं इसको। एक बहुत ही छोटी सी चीज अगेन, पुराना माल नए लिफाफे में है, दैट इज कॉल्ड ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एक लाइन में बताओ ना, तुम खुद ही आंसर कर दोगे। इफ आई राइट द सेम रिएक्शन एंड आई डिस्कस दैट एट द एंड ऑफ लीच-एटल प्रिंसिपल आल्सो, इफ आई राइट दिस थिंग, पानी ऐड कर दूं, शिफ्टिंग किधर होगी? वाटर ऐड करने से to किधर the शिफ्ट? left. Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? So वाटर ऐड करने backwards, से no? क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से शिफ्टिंग किधर होती है, जिधर एक्वस आयंस बढ़ेंगे।
जिधर एक्वस मोल्स बढ़ेंगे इन जनरल, तो एक्वस मोल्स कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में। एंड फॉरवर्ड में बढ़ा तो डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो गया? बढ़ गया ना, इंक्रीज। है ना? सो दैट्स द लाइन, दैट इज कॉल्ड ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. सो इट सेज, पहली बात, व्हाई इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट विल हैव ओनली रिवर्सिबिलिटी, है ना. HCl के आयनेशन पे there will be no impact if I am adding water, है ना, because it is already 100% ionized and there is no difference on dilution. So dilution means adding more water, है ना. Adding more water will lead to more degree of ionization of the weak electrolyte, and that is called Oswald's dilution law. That means even if we call CS3COH as a weak electrolyte, if I am having an extremely diluted solution of weak electrolyte, it will also start behaving as strong electrolyte, क्योंकि अल्फा बढ़ता चला जाएगा ना. तो मान लो पहले 0.1 m था मोलरिटी, मैं उसको पानी डाल डाल के 10⁻⁻8 पे पहुंचा दूं, तो उसका बिहेवियर विल बी, उसका अल्फा विल बी वेरी क्लोज टू 1. So we'll say कि it will give you the same number of H plus ions which is given by HCl, because ये भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगा है ना. So that behavior also depends on the extent of dilution or the concentration of weak electrolyte present in the solution. Is it okay? चलो यहीं पे क्लोज करते हैं. नेक्स्ट डे विल स्टार्ट दैट, मैंने बोला था जो नंबर ऑफ केसेस वी आर गोइंग टू डील विद ना, विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल केस, एंड दैट इज द केस ऑफ aqueous solution which is having one or more only strong acids. Then we'll talk about strong bases, फिर weak पे जाएंगे, फिर weak acid, weak base, and so on will be there. ठीक है, ओके चलो क्लोज करते हैं ना. चलो सर बाय. अभी केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर कितने बजे होगा? हाँ, आधे घंटे में स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, आधे घंटे, ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय। ओके, बाय सर. बाय. थैंक यू सर, बाय सर. So, हाँ गीत, want to say something? also actually मेरा ना आयोनिक इक्विलिब्रियम मतलब पेस में हुआ था, मतलब ठीक Okay. ठाक से. ठीक तो है, आप क्या रेकमेंड करते हो, मतलब क्लास में अगर मैंने सम सॉल्व वगैरह किया तो चल सकता है क्या? हाँ बिकॉज चलेगा. अदरवाइज आई देखो पेस का मॉड्यूल भी इज गुड इनफ. या इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट ना, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड दिस सेशन. चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना. बट इफ यू सॉल्व द क्वेश्चंस, और अदरवाइज आई हैव सेंट 2 असाइनमेंट्स, और अदरवाइज आई विल सेंड इट टू यू, है ना. मैं ओके. ग्रुप पे भेज दूंगा, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोस असाइनमेंट्स, है ना. एक्चुअली मैंने पेस के मॉड्यूल का एफबी और एफबीएस का पार्ट किया था, तो आप मतलब अब आगे आगे नहीं किया, रेकमेंड क्या करते नहीं हो? आगे आगे के नहीं किया क्वेश्चंस है. भी है, आगे के अच्छे क्वेश्चन है. अदरवाइज आई विल सेंड यू द असाइनमेंट. ठीक है, ओके जस्ट तो सॉल्व. चले. ओके सर, ओके.